FY 22-23, you were generating a revenue of 600 crores. And from 600 crores, you went down all the way to zero. And then you had to shut down the company. उस टाइम तो मैं घोड़े पे सवार था. I should have known when to stop and consolidate. Instead, I continued to burn to grow. November 2021, the Good Glamm Group became the first direct-to-consumer beauty unicorn of South Asia. दोस्तों 7,000 करोड़ से जीरो तक, इंडिया के फास्टेस्ट ब्यूटी यूनिकॉर्न से कंप्लीट कोलैप्स तक, दर्पण सांघवी ने ये सब देखा है. यूनिकॉर्न स्टेटस, स्टार स्टडेड कैंपेन्स, इन्वेस्टर फ्रेंजी और फिर एक दिन सब कुछ गायब. इस एपिसोड से हमने वो सीखा जो टेक्स्ट बुक्स कभी नहीं सिखाती. और इस एपिसोड में आप उन गलतियों के बारे में सीखोगे जिसकी वजह से एक 7,000 करोड़ का एम्पायर एक झटके में गायब हो गया. ऑनलाइन में हम बर्न कर रहे थे एंड मैंने डिसाइड किया मैं ऑफलाइन में जाऊंगा. अगेन टू मच, आई हैव टू डू एवरीथिंग, आई हैव टू ओन. अरे आई एम गोइंग टू बिकम द डिजिटल यूनिलीवर. बन गया यूनिकॉर्न यार. पॉज कर और अभी कंसोलिडेट कर. तो सर यहाँ पे लेसन क्या है? तो वन एडवाइस टू ऑल एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, प्लीज डू नॉट बिल्ड अप कंटिंजेंट लायबिलिटी. That was also my biggest mistake. आपने सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करा, सिद्धार्थ के साथ काम करा, आपने मनीष मल्होत्रा के साथ भी काम करा. तो क्या ये सेलिब्रिटी ब्रांड्स सच में चलते हैं? क्या इज इट जस्ट हाइप? If the celebrity is, it doesn't. मेकअप ब्रांड्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं? गजब की बात यह है, वर्ल्ड में 10 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं जो सारे कंपनियों के लिए बना रहे हैं. सारे? वाई सर? सी स्किन केयर में आपने एक क्रीम निकाली, वो एक ही SKU है, एक ही क्रीम है. मेकअप में आप बोलो यू वांट अ लिपस्टिक, यू नीड 50 फ्रिकिंग शेड्स. सर आज की डेट में कौन से ऐसे निशेस हैं जहां पे ब्यूटी ब्रांड्स बन सकती हैं? सर व्हेन दीस फेलियर्स स्टार्टेड टू पॉप अप, आपके फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया, आपके दोस्तों ने कैसे रिएक्ट किया और आपके इन्वेस्टर्स ने कैसे रिएक्ट किया? दोस्तों ये चैनल ज़ेरो थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं. तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो. आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है. गुड मॉर्निंग दर्पण सर, वेलकम टू द इंडियन बिजनेस पॉडकास्ट. सर हमारे पॉडकास्ट में हमने हमेशा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बात किया है, बट आज यू बीन सो जेनरस that you're here to share the story of your failure. और मैं Good Glam Group के बारे में पढ़ रहा था and I just saw that in FY 22-23 you were generating a revenue of 600 crores. And from 600 crores you went down all the way to zero and then you had to shut down the company. Now that is a crazy fall. Which means if you got to 600 crores आपने बहुत सारी चीजें सही करी है. And then if you fell from 600 crores to zero, इसका मतलब ये है कि on the way there have been certain process flaws, system flaws because of which this failure happened. तो आज अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं चाहता हूं कि पहले तो वो फेलियर से डरे ना. दूसरा वो ये समझे that if you learn from your mistakes, you're intelligent. But if you learn from somebody else's mistake, you're wise. So I want people to be a wiser version of who they are right now. And third and most importantly, I want them to understand all the kinds of failure that you actually saw and learn from those failures in such a way that they don't make those systemic errors, they don't make those judgment errors. If that's clear, shall we get started, sir? Absolutely. Perfect. Sir, पहले तो ऑडियंस को एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि गुड ग्लैम ग्रुप था क्या और आप करते क्या थे. गणेश, आपने कहा सक्सेस, आपने कहा फेलियर. बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा और सारे जो एंटरप्रेन्योर्स वहां पर हैं जो या बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर या जो एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब सक्सेस 20% एंटरप्रेन्योर के हाथ में है. 80% इज टाइमिंग, मार्केट कंडीशन, थिंग्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके हाथ में नहीं होते हैं. मेरी पहली कंपनी मैंने अपनी 20 साल की उम्र में शुरू करी थी. मैं यूनिकॉर्न बना एट द एज ऑफ 42. 22 साल लगा रहा उस पे मैं, राइट? तब जाके यूनिकॉर्न बना. ठीक है, ये तो हो गई सक्सेस की बात. बट अगेन एक ओवर आर्चिंग थॉट में कहूं, जो मैंने आपको 20-80 रूल था सक्सेस के लिए, जिस दिन आपको सक्सेस मिल गई है आप अपने दिमाग में मान लो इसके बाद इट इज अ 80-20 रूल. 80-20 रूल. फेलियर 80% आपके हाथ में है, सिर्फ 20% मार्केट कंडीशंस में है. अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर ये अपने दिमाग में डाल दोगे, देन एवरी डिसीजन यू मेक आफ्टर यू हैव रीच्ड दैट सक्सेसफुल पॉइंट, you will think 10 times about. And it's very important you do that. And I would love to talk about that today कि अगर मैं देखूं लास्ट 3 साल की जर्नी आफ्टर हम यूनिकॉर्न से वापस जीरो बने, क्या क्या मैंने डिसीजंस करे एंड उसे कैसे लोग अवॉइड कर सकते हैं. मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू करी 99-2000 में
उस टाइम पे ना इंटरनेट हैड जस्ट टेकन ओवर एंड देयर वाज द होल .com बूम. तो उस टाइम सबसे फेमस .com थी hungama.com. बहुत पॉपुलर थी. इट वाज दिस कंटेंट गेमिंग करके .com जो अभी भी है, बट बैक देन इट वाज जस्ट द ओनली रियल .com आउट. तो मैंने मुझे तो पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा था, बट मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी masthangama.com. और उसका मैंने स्लोगन लिखा, हंगामा सक्स इफ इट्स नॉट मस्त. वो वेबसाइट तो कहीं गई नहीं क्योंकि मेरा ना बिजनेस मॉडल था, मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या कर रहा था, बट इट गॉट मी नोटिस्ड बाय बैक देन द हेवीएस्ट फंडेड .com which was called bazi.com, जो आज है eBay इंडिया. बाजी was started by अवनीश एंड सुवीर. अवनीश आज मैट्रिक्स वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर है, सुवीर नेक्सस वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर है. सो दे वर वन ऑफ द टू आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर्स बैक इन 2000. एंड bazi.com में उस टाइम रूपर्ट मुर्डॉक की स्टार टीवी ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी सन 2000 में. तो मुझे अवनीश और सुवीर की ऑफिस से कॉल आया, वी वांट टू इंटरव्यू यू. मैं 20 साल का बच्चा, मैं गया बॉम्बे, ऐसे एक रूम में बैठा था. अवनीश और सुवीर मेरे सामने, दोनों हार्वर्ड ग्रेजुएट, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर, मैं छोटा सा बच्चा. उन्होंने मुझे इंटरव्यू करी. एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू दे सेड यू हैव द जॉब. एंड उन्होंने मुझे जॉब करी, गेव मी अ जॉब टू सेट अप bazi.com इन द सिटी ऑफ पुणे. तो पहला चैलेंज तो ये था कि भैया लोगों को bazi.com क्या था? इट वॉज eBay, मतलब इट वॉज ऑनलाइन ऑक्शन. eBay जो करता था कि आपके घर पे एक कप पड़ा है, इसे ऑनलाइन बेच दो, ऑक्शन पे आपका बिक जाएगा, राइट? सन 2000 में लोगों को तो ऑक्शन ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ही लोगों को पता नहीं था. करेक्ट. तो मैंने कहा कि मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि ऑनलाइन ऑक्शन करें. तो मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करी. अच्छा, ये एक अच्छी चीज थी कि bazi.com हेवीएस्ट फंडेड .com, तो वी हैड सम डिसेंट बजट्स. तो मैंने जगजीत सिंह जी को बुलाया कॉन्सर्ट के लिए. जगजीत सिंह जी, great master, ghazals, amazing man. And you know, Jagjit sir used to wear these iconic shawls. He was well known for it back then in the day. तो सर की गजल चल रही है, पुणे के who's who आए हुए हैं, प्रेस मीडिया आई है, सब आए हुए. और शो के बीच में जगजीत सर ने पॉज लिया. उन्होंने कहा, अब मेरी इस शॉल पे बाजी लगेगी, आप सब ऑक्शन बिडिंग शुरू करिए. एंड इट वॉज अ सुपर हिट बिकॉज सारे पेपर ने कवर किया, सबने कवर किया. एंड ही ऑक्शन इट ऑफ, ही सेड ये होता है bazi.com पे, राइट? एंड इट वॉज सच एन, आई मीन एज अ 20 साल का बच्चा टू ऑर्गेनाइज सच एन इवेंट विद जगजीत सर, हैव द who's who ऑफ द सिटी, ग्रेट एक्सपीरियंस. तो एक साल bazi.com के साथ था. फिर उसके बाद फादर ने कहा, प्लीज अपनी इंजीनियरिंग खत्म करो, गेट बैक टू स्कूल. And then I finished my engineering and I went for my MBA to SRD Business School, Barcelona. मैंने क्या कहा, उस समर में for internship, I started applying to other business schools that are smaller and saying I can come and help publicize your business school. And there I got an interview with the University of Monaco, Monte Carlo. And वहाँ के डीन को मिलने गया मैं. And he didn't give me a job, but we stayed in touch. एंड जो आगे मेरा लाइफ में हुआ है, ही प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट, एंड यू विल सी हाउ द डॉट्स कनेक्ट लेटर, राइट? फॉर जो हमारे जो भी सुन रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, याद रखो, यू हैव टू फाइंड अ वे टू कनेक्ट ऑल योर डॉट्स. द डॉट्स विल कनेक्ट एट सम पॉइंट और द अदर, राइट? इंडिया में दिस इज नाउ सन 2008 कि इंडिया में इतने ब्रांड नहीं है. इंडिया वो स्टिल ब्रांड्स आ रहे थे इंडिया में. अपॉर्चुनिटी आई फाउंड वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग ब्यूटी ब्रांड्स टू इंडिया. दैट्स जस्ट, इतना भी जितने में लोगों से मैंने फैशन ब्रांड देखे, अपैरल ब्रांड देखे, चश्मे के ब्रांड देखे, जूते के ब्रांड देखे, सब देखा मैंने. आई थॉट ब्यूटी में अपॉर्चुनिटी थी. एंड मैंने आपको कहा ना, वो जो डीन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको, जब मैं सिंगापुर में रह रहा था सेलेनीज केमिकल्स के जॉब के साथ, ही हैड इंट्रोड्यूस मी टू वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स देयर. वो स्टूडेंट मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया. हिज नेम इज जेसी, फ्रेंच गाय. एंड जब मैं ये ब्रांड्स देख रहा था, तो जेसी ने कहा कि यार, मेरा एक दोस्त है, उसका एक होटल है बाली में, एंड वहां पर एक लॉक्सीटान का स्पा है. लॉक्सीटान इज दिस अमेजिंग फ्रेंच ब्रांड. उसका स्पेलिंग, लॉक्सीटान का स्पेलिंग है LOCCITANE. तो प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू स्पेल इट आउट. एंड तो ही इंट्रोड्यूस मी टू दिस गाय पत्रीस, जिसका होटल था बाली में. एंड वो पत्रीस से मेरी दोस्ती हुई. एंड पत्रीस ने कहा एक दिन कि यार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लॉक्सीटान आ रहा है, तो आजा, मैं तुझे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. And I showed up over there. And that was the turning point of my career. That meeting with Mr. Andre Hoffman, who is the managing director of L'Occitane.
I just went to Andre sir and I said, Andre, I don't have any money to give you, but I promise you one thing, that the best L'Occitane spas of the world will be in India. हमारा जो पहला स्पा था वो देवीगढ़ पैलेस में था उदयपुर में. वाटर मतलब वो प्रॉपर्टी वाज मैजिकल. जो आंड्रे के जो बॉस हैं और जो लॉक्सिटान के चेयरमैन और सीईओ हैं राइनॉल्ड सर, वो जब आए इंडिया पहली बार और जो स्पा आए देवीगढ़, ही वाज लाइक वाओ. वो 6 महीने के बाद अपनी पूरी फैमिली को लेके आए. तो सर यहाँ पे लेसन क्या है? पहले तो फिगर आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन आप जो उनको प्रोपोजिशन कर रहे हो, मे बी अगर मैं उनको कहता कि मैं आपको $1,00,000 दूंगा, मे बी दैट वुड नॉट हैव बीन एज इंपॉर्टेंट टू हिम. मेक योर प्रोपोजिशन अराउंड what is valuable to him, and a lot of times what is valuable to him is beyond money. And I stayed true to that premise. That's the reason why L'Occitane mera was one of my pehla investor jab MyGlamm shuru hua, and I'll come to that also. But sir, how do you find what is important? Because मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ये चीज मुझे पूछते हैं. How do you be a nobody, go in front of somebody very important, find out what is important to them and then pitch it to them? Sir, मैं जब सिर्फ MyGlamm था और हमारा रेवेन्यू 50 करोड़ का था, what is 5 crore rupees, $6-7 million. मैंने सरीना विलियम्स को तब जाके पिच करा है. I didn't go and pitch to her when I was a unicorn. Oh damn. I realized that the most important thing for her was the product. बिकॉज अगर हमारी अल्टीमेटली जॉइंट वेंचर हुई है, राइट? जॉइंट वेंचर हुई मतलब हम दोनों जॉइंट वेंचर पार्टनर थे, हम दोनों का इक्विटी कंट्रीब्यूशन था उसमें, हम दोनों ने इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें, राइट? तो इट वाज नॉट लाइक कि अगेन आई हैड लाइक अ $10 million चेक टू गिव एंड से प्लीज साइन अप, राइट? तो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज जस्ट हैव दैट बिलीफ इन योरसेल्फ कि यू हैव इनफ टू ऑफर, राइट? एंड फाइंड दैट जुगाड़ टू गेट इन फ्रंट ऑफ समवन. देन जब आप उनके साथ बात कर रहे हो, आपको आपको क्लिक हो जाएगा कि उनके लिए, बिकॉज देखो अगर उनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज सी पैसे सबको इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, भैया बिजनेस चला रहे हैं सब लोग, बट पैसे के अलावा, बिकॉज पैसे होते तो अलग बात है, बट पैसे के अलावा देयर इज जब ये लोग एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं लाइफ में, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड मनी दैट मैटर टू देम. And you have to find that, and then of course through that show the path to money also. उस तरह से मैं ब्यूटी सर्विसेज बिजनेस में घुस गया. 2010 से 2015 तक वो चल रहा था. एंड 2015 में मैं न्यूयॉर्क में था एक मीटिंग में, एंड किसी ने मुझे इस कंपनी के बारे में कहा, ग्लैम स्क्वाड. ग्लैम स्क्वाड क्या करता था, वो एक ऐप के ऊपर घर से आपको स्टाइलिस्ट भेजता था, जो अर्बन क्लैप ने किया एंड परफेक्ट किया. And I was like, oh, I remember, मैं बैठा था, मैं कुर्सी से नीचे गिर गया. I said, अरे ये स्पा सलॉन सर्विस तो मुझे आते हैं, मेरे इंडिया में 20-25 स्पा सलॉन है, मैं अभी उसका एक ऐप बना देता हूं और आपको स्टाइलिस्ट ऑन डिमांड, उबर फॉर सलॉन एंड स्पा सर्विसेज तो मैं कर लेता हूं. एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट अवतार ऑफ MyGlamm was born. Most people don't know that. जब MyGlamm शुरू हुआ 2015 में, इट वॉज एन ऑन डिमांड एट होम ब्यूटी सर्विसेज एट होम, उबर ऑफ सलॉन एंड स्पा सर्विसेज. अच्छा, जब तक मैंने लॉन्च करी अगस्त 2015, तब तक फंडिंग की विंटर शुरू हो गई थी. एंड आई रिमेंबर मार्च 2016 में हमारे पैसे खत्म हो गए. एंड मैंने सारे इन्वेस्टर जो बाकी जितने इन्वेस्टर आप सोच सकते हैं सबको मिलके आ गया, सबने मुझे मना कर दिया. एंड मैंने एक ईमेल भेजा आंड्रे को, हमारे जो लॉक्सिटान के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, थे अभी नो लॉन्गर मैनेजिंग डायरेक्टर, बट एंड आई सेड कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू कंपनी आंड्रे, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट? एंड बिकॉज एवरीथिंग दैट आई टोल्ड हिम व्हेन आई टुक द लॉक्सिटान स्पा का लाइसेंस, I delivered. He didn't ask me a question. He just asked me how much. I said between 1 to 2 million. And he said, okay, we will do 2 million. And he wired the money. I mean, it was purely on trust and his belief and faith in me. And we survived. But उसके 6 महीने के बाद मैं Andre के पास गया and I said, Andre, I took your money, but this business is not working. Why is not working? I said, sir, I spend all the CAC on Facebook और Google को पूरा पैसा देता हूँ, जो स्टाइलिस्ट है कस्टमर को अक्वायर करता हूँ, स्टाइलिस्ट को भेजता हूँ कस्टमर के घर पे, दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं ऑफ द प्लेटफॉर्म, डिसइंटरमीडिएशन रोज हो रहा है. तो सर अब क्या करेगा? आई सेड ना, अब मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है कि आई कैन बिल्ड माई ओन ब्यूटी ब्रांड
मैं ब्रांड बिजनेस में भी 6-7 साल से हूँ, दूसरों के ब्रांड कर रहा हूँ, अब मैं अपना खुद का कर सकता हूँ. एंड लेट्स मेक माई ग्लैम इनटू अ DTC मेकअप ब्रांड. एंड अगेन आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, क्योंकि आपने इतना बड़ा ब्रांड बनाया है ग्लोबली, स्किन केयर में, नॉट इन मेकअप, बट यू नो लेट मी डू दिस. एंड ही सपोर्टेड मी. एंड अक्टूबर 2017 में जो माई ग्लैम आपने आज देखा है was born. So it was born from a pivot of a home service business into a DTC makeup brand. And वहां से My Glam की जर्नी शुरू हुई to Good Glam, right? तो 2017 सर अगर मैं कहूँ तो ये हो गया 8 साल पहले, right? First company at the age of 20. My Glam, the makeup brand, at the age of 38. That's when it happened, right? I don't know again अगर आपको पता है, but My Glam लास्ट था. शुगर ने अर्ली 2015 में शुरुआत की थी, मामा अर्थ ने अर्ली 2015 में शुरुआत करी थी. तो आई वाज वन ऑफ द लास्ट DTC ब्रांड्स दैट केम आउट, राइट, फ्रॉम दोस ओल्ड क्रॉप. सर थोड़ा मैं यहाँ पे रिवाइंड करना चाहता हूँ. मेकअप ब्रांड्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं? श्योर. डू दे मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट्स? नो, मोस्ट मेकअप ब्रांड्स डोंट मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट्स. 95%. सर मेकअप ब्रांड, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है. मेकअप ब्रांड है ना सर, इट्स ऑल अबाउट ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मेकअप ब्रांड में क्या होता है, आपका ब्रांड का आइडिया होता है, आप अपनी R&D रखेंगे जहां पर आप लेटेस्ट ट्रेंड्स निकालेंगे, फिर आप वो ट्रेंड को लेके जाके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के जाएंगे. गजब की बात यह है गणेश, वर्ल्ड में 10 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं जो सारे कंपनियों के लिए बना रहे हैं. सारे. तो मतलब वही काजल, मेबेलिन, लॉरियल, माई ग्लैम, 99% तो फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ पैकेजिंग अलग है, सेम फैक्ट्री से आती है. ओह शिट. तो फिर सर क्वालिटी में इतना फर्क कैसे आता है? नहीं सर, कहाँ है क्वालिटी में फर्क, आप टेस्ट करके देखिए कि कुछ प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाता है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट से तो नहीं वो होता तो फिर वो होगा where there are some, बट अगर आप कोई अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स में जाओगे, यू विल बी अमेज्ड कि 80% ऑफ द बेस फॉर्मुलेशन इज द सेम. फिर वो थोड़ा आपकी ट्विस्ट आ गई कि आपने विटामिन C डाल दिया, कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया. दैट इज वेयर योर मार्केटिंग एंड योर R&D टीम इज कमिंग, राइट? तो यू हैव टू फाइंड दीज. अगर आप सो मेकअप बिजनेस एक्चुअली बैरियर टू एंट्री टू लॉन्च इज वेरी लो, क्योंकि आपको एक्सपर्टीज तो चाहिए नहीं. आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर पे कैसे चले जाओ, और अगर आपके पैसे हैं, एज लॉन्ग एज यू कैन हिट द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. अभी ये बड़ा ट्रिकी चीज है. मेकअप में क्या होता है सर, आपने एक लिपस्टिक निकाली, बट वो एक लिपस्टिक नहीं है, वो 50 शेड है. सी स्किन केयर में आपने एक क्रीम निकाली, वो एक ही SKU है, एक ही क्रीम है. मेकअप में आप बोलो आई वांट अ लिपस्टिक, यू वांट अ लिपस्टिक, यू नीड 50 फ्रिकिंग शेड्स. What does that mean? If each shade has an MOQ of 5,000 pieces, 5,000 into 50, 2.5 लाख पीस का आपका ओपनिंग ऑर्डर, कहां बेचोगे 2.5 लाख पीस? 5 शेड नहीं कर सकते सर, बहुत मुश्किल है सर. वी आर यूज्ड टू, आवर कंज्यूमर इज यूज्ड टू दैट वैरायटी. जब दूसरा ब्रांड के पास 50 शेड है, 100 शेड है, तो वो तो बोलेगा कि आई विल गो वेयर आई कैन ट्राई डिफरेंट शेड्स एंड सी व्हाट सूट्स मी द बेस्ट. बिकॉज सर यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी ये है किसी भी एंटरप्रेन्योर का, एटलीस्ट मेरा लॉजिकल सेंस ये बोलता है कि अगर 50 शेड है तो 80-20 होगा. करेक्ट. 80% of the sales will be coming from 20% of the catalog. 100%. So you just have to manufacture those. You just have to identify those 10 shades, manufacture them. It doesn't acquire work. customers. It doesn't work. The customer won't come. Why, sir? Because the customer still, you're right, that sale ultimately वो 10 शेड की होंगी, but वो customer wants to see all the other shades. ये मेकअप बिजनेस, इट इज इनहेरेंट कंज्यूमर बिहेवियर इन द मेकअप बिजनेस. आज देखो, आज फाउंडेशन के 30 शेड होते हैं. फाउंडेशन के पहले फाउंडेशन के 5-5 शेड होते थे. लिपस्टिक के तो हमेशा ही लार्ज नंबर ऑफ शेड होते हैं. सो इफ यू डोंट हैव दैट वैरायटी, इट्स वेरी हार्ड. इन अ वे इट्स लाइक, अगर मैं फैशन के साथ कंपैरिजन करूं, तुलना करूं, इट्स लाइक सेइंग कि फैशन में आपको कम से कम 4 या 5 साइज होने चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट फिट्स यू द बेस्ट. इन दिस इट्स नॉट अबाउट द फिट, इट्स अबाउट द शेड, एंड यू नीड टू हैव दैट मेनी शेड्स. ठीक है. So the key was कि अरे कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर ढूंढो जो बना सकता है. एंड इफ यू कैन सर, अगर इफ यू गो टू द टॉप 5 एंड उन्होंने आपका प्रोजेक्ट ले लिया, यू कैंट गो रॉन्ग इन योर प्रोडक्ट क्वालिटी. देन आप अपना आग बंद कर लो, योर प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी टॉप क्लास. कौन से है सर, इफ आई मे आस्क? 100% you can ask. So the one that I work closest with is called Regi, REGI. अगर कोई भी मेकअप बिजनेस में घुसना चाहता है, I would say Regi is probably one of the top ones to work with, क्योंकि they are big Italian manufacturer, so they have great formulations, but उनके पास एक बहुत अच्छी इंडियन यूनिट भी है, तो वो आपके इंडियन प्राइसिंग में अच्छे से कर सकते हैं. प्लस द ओनर्स आर वेरी एंटरप्रेन्योरियल, राइट? विक्टोरिया, हु इज द ओनर ऑफ रेजी, शी हेल्प मी सो मच इन माय इनिशियल डेज. तो
रेजी इज वन. फिर अगर हम अपने इंडियन मैन्युफैक्चर में देखें, वीवा इज देयर अनदर वन. अमेजिंग. आई मीन व्हाट अ मैन. उन्होंने ग्राउंड अप, रियल एंटरप्रेन्योर, छोटी फैक्ट्री से मतलब ग्राउंड अप क्या बिजनेस बनाया है, राइट? संजय ठाकुर है उनका नाम. देन देयर आर सम स्मॉलर गाइज लाइक कैसकैप, उनके ओनर शलभ शर्मा, अगेन ग्रेट जेंटलमैन. सी, यू नीड टू फाइंड मैन्युफैक्चरर जो आपके साथ क्लोजली काम करे एज अ फैमिली, right? They can make the difference. Then if you want some other big international names, the biggest of them all is Intercos. He's the big daddy. Intercos is owned by L Catterton. Mr. Ferrari is the chairman, the founder, and then he got L Catterton into the company. अच्छा, कोरिया में बड़ा interesting company है Kolmar करके. कोरिया में some products are fantastic, eyebrow products and some of the other products. Skincare भी Kolmar का बहुत बढ़िया है, right? हमारे Indian skincare supplier में अगर आप वैदिक देखें, वो भी अच्छे हैं. There is NG Electro, unknown, I mean amazing, people don't know NG Electro. ये लोग अमेरिका, उनका आधा एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पर. That is the quality that they make over there. And very entrepreneurial guy, young guy called Raghav, very very entrepreneurial guy. तो you know there are enough and more. अगर आपका ड्रीम है कि आपका ब्यूटी ब्रांड आपको बनाना है, चाहे वो मेकअप में हो, स्किन केयर में हो, there are enough and more young suppliers out there who can find a supplier who will work closely with you. वो बहुत इंपॉर्टेंट. अगर वो आपका एकदम आप एक 1 यूनिट बन गए ना, तो आप इनोवेशन कर सकते हो साथ में मिलके, आपके आइडियाज, एंड ही विल ब्रिंग इट टू लाइफ, एंड यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन फैक्ट्री स्केलिंग अप. कोई झंझट नहीं. आज 10,000 ऑर्डर है, ग्रेट. कल लाख ऑर्डर है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर. So just to summarize, just so that the audience is with us, if you want to start a beauty brand, तो पहला स्टेप ये है प्रोडक्ट रिसर्च करो, ताकि आपको ये पता चले कि मार्केट में बिक क्या रहा है, क्योंकि आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर देना पड़ेगा. तो जैसे आपने लिपस्टिक का एग्जांपल लिया, जब आप लिपस्टिक बेचते हो तो आप सिर्फ 50 यूनिट्स का ऑर्डर नहीं देते हो, आप 50 शेड का 5000 MOQ का ऑर्डर देते हो. यानी कि 50 शेड और हर शेड बनेगा 5000 यूनिट्स का, तो आपको 2.5 लाख यूनिट्स का तो ऑर्डर देना पड़ेगा. Correct. और वो लेके आपको मार्केट में लेके जाना है, उसको ब्रांड करना है, उसके लिए शायद आपको स्टोर सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए ई-कॉमर्स लगेगा. Correct. फिर आप मार्केटिंग में खर्चा करोगे, Correct. फिर आप कस्टमर को एक्वायर करोगे, फिर आप बेचोगे. तो आपका जो असली गेम है वो प्रोडक्ट को बनाने में नहीं है, ये पता करने में है कि कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा और उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है यूजिंग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. सो मोस्ट ब्यूटी ब्रांड्स स्पेशलाइज इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च एंड नॉट प्रोडक्ट डेवलपमेंट. You've summarized it beautifully, sir. परफेक्ट. इसमें बस एक चीज ऐड करूंगा, लर्निंग, कि कम MOQ से कैसे शुरू करें. जैसे आपने कहा, सबसे बड़ी चैलेंज ये है, आइडेंटिफाई वन नीश विच इज फुल्ली ओपन. सर आज की डेट में कौन से ऐसे निशेस हैं जहां पे ब्यूटी ब्रांड्स बन सकते हैं? सर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ निशेस. आपको आइडेंटिफाई करना है. पिक टॉप 3 नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. नहीं, मतलब हर कैटेगरी में ना, हेयर में है, स्किन में है. आपका अभी आप देखो मिनिमलिस्ट, उन्होंने क्या ब्यूटीफुली किया. दे सॉ द ट्रेंड, द ऑर्डिनरी. दे सॉ कि भैया एट अ गुड प्राइस यू गिव हाई एक्टिव इंग्रेडिएंट, आप सीरम दो. सीरम का ट्रेंड उन्होंने पिकअप किया. वी सॉ अमेजिंग स्टोरी. उन्होंने 3000 करोड़ में. अनदर थिंग, लर्न व्हेन टू एग्जिट. ये मैंने नहीं सीखा था, राइट? दे लर्नड इट ब्यूटीफुली. दे एग्जिटेड एट द पीक, got a great price for themselves and their investors, right? And have given their brand to a nice big group now, right? So that's another thing. So I think it's impossible, Ganesh, to say कि ये 3 white space हैं. नहीं sir, it's not a macro white space, it's a micro white space. And I'll explain to you how. Huda Beauty. Huda is a very well-known influencer who started a beauty brand जो $1 billion का बन गया. But she started with one product. Her thing was eyelash, fake eyelash. Imagine, उन्होंने एक $1 billion beauty brand बनाया है with the start being a fake eyelash product. She identified because वो अपने comments में देखा था, whatever she thought कि उसका fake eyelashes के ऊपर करेगी. And then एक बार मार्केट ने accept किया, आपका ब्रांड चलने लगा, then you go all out. Right? तो पहले ब्रांड एस्टैब्लिश करो, एक माइक्रो कैटेगरी चूज करके, और फिर एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट करके, राइट? अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जितना ज्यादा है, उतना आपका मार्केटिंग और ब्रांडिंग इजी पड़ेगा आपको. जैसे सीटाफिल का मॉइस्चराइजर. एब्सोल्यूट सर. अगर मैं अपने गुड ग्लैम के पोर्टफोलियो में देखूं, सिरोना जो ब्रांड था हमारा, which was started by 2 great entrepreneurs, Deep and Mohit, and ब्रांड अभी उनके पास वापस है, which is great. I think they'll do great job with it. बट वो ब्रांड हमारे लिए सबसे इजी था मार्केट करने के लिए. पता है क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट और कोई बनाता ही नहीं था. पहला मेंस्ट्रुअल कप, तो भैया कोई सर्च कर रहा है तो वो तो यही है ऑप्शन, राइट? सो दीप ऑलवेज फोकस्ड ऑन गेटिंग दैट इनोवेशन इन द प्रोडक्ट, विच मेड श्योर कि
the products are well differentiated, right? And so that would make the life easiest. तो अगर आपकी differentiation strong है, then it's fantastic. सर एक क्वेश्चन है, ये ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि मैं अपने फ्रेंड सार्थक ओझा से बात कर रहा था. सार्थक ने ना मुझे एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क दिया. सार्थक ने मुझे बोला, फाइंड अ कंट्री दैट इज 2 to 5 years ahead of India in terms of that particular trend. Correct. China is ahead in terms of electronics. South Korea is ahead in terms of beauty. You will see certain conferences or exhibitions being held for that niche in that country. Go to that country, attend that exhibition, attend that fair. There you will see all sorts of products, all the manufacturers, and you will see where that industry is heading. तो आपको साउथ कोरिया में जाके ये पता चलेगा कि स्किन केयर एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा है. And then you can actually come back to India, use your customer understanding, build your minimum viable audience, and figure out, okay, maybe 5 years later, hair care in India will become a big category. Then you come back and see how you can import certain products, put it in the market, and see if you're able to achieve product market fit. तो ये फ्रेमवर्क मुझे सार्थक ने बताया. आपका कोई फ्रेमवर्क है सर? सर ये फ्रेमवर्क बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है. इसमें एक चीज ऐड करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, डीप कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग. असली इंसाइट वहां से मिलेगी आपको. एक मैं कहूं, अगर आप मुझे पूछो कि एक क्या ग्रेट आइडिया हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पर इंडिया में, एंड वी वर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट, बट फिर जो हमारे साथ हुआ. अगर आपने एल्फ कॉस्मेटिक्स देखा यूएस में, ELF, उसका नाम क्या था? आईज लिप्स फेस, एल्फ कॉस्मेटिक्स. बहुत बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल. अगर मैक या कोई दूसरा ब्रांड $10-15 में लिपस्टिक बेच रहा है, मैं $2 में बेचूंगा, एंड आई ट्राई टू गिव अ सिमिलर क्वालिटी. Now, ironically, America is a prestige market, is a premium market for these products. यहाँ पर prestige brand ज़्यादा बिकते हैं. And in the last few years, Elf ने फोड़ दिया सर उसका market cap 10 billion अभी पहुंचा था बीच में. Oh shit. And it's crazy. Now you think about it, India is a price sensitive market. We are a value focused market. We are like that. All of us are that way. And if you are able to, क्योंकि यहाँ पर वही लिपस्टिक 700 में बिक रही है और आप वो 99 में दो, 199 में दो, एंड यू गिव अ सिमिलर क्वालिटी, तो फोड़ दोगे मार्केट को. एंड उसी डायरेक्शन में वी वर इवेंचुअली ट्राइंग टू टेक माई ग्लैम डाउन बिफोर व्हाटएवर हैपेंड विद अस. आई वुड से अपॉर्चुनिटी फॉर एनी यंग एंटरप्रेन्योर आउट देयर. सी एल्फ जैसे, इंडिया इज अ मार्केट राइप फॉर अ बिजनेस मॉडल लाइक एल्फ. Understood. So now coming back to the My Glam story, you identified that this is the framework to build a beauty brand. Then you contacted the contract manufacturers. And then you got in touch with Reggie, if I'm not wrong. No. Reggie came later. Okay. So I spoke to my friend Praveena. She put me in touch with someone. I forgot who that contract manufacturer is because I never worked with that person. ठीक है? But उनकी फैक्ट्री में खड़े मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि who's a good R&D person? Because इस समय एक R&D person तो चाहिए ना आपको. आपने जैसे आपके फ्रेमवर्क में कहा R&D needs to be yours or manufacture बाहर हो. मुझे तो कुछ नहीं पता था. And she said, yes, there is one very amazing lady in India. She used to be with Kalaba. And I forgot her name. I said, kya naam? I said, don't remember. She said, I think her name is Smita. Okay, this lady was Italian, so that's how I accented. She's like, her name was Smita. And I said, last name? She said, I don't know. I said, okay. मैं जैसी गाड़ी में बैठा गया गूगल पे, आई सर्च स्मिता, दिस वाज 2016, स्मिता कलबा, एंड दिस नेम पॉप्ड अप, स्मिता बैसाखिया कलबा. पूरा हमारा जो भी माई ग्लैम बना, विन ब्यूटी बाय सरीना विलियम्स बना, जितने ब्रांड्स बने, स्मिता वाज द इंटीग्रल R&D पार्ट ऑफ दैट. शी इंट्रोड्यूस मी टू विक्टोरिया, द ओनर ऑफ रेजी, एंड वहां से हमारा फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आया. देन ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड गेटिंग ऑल द अदर सप्लायर्स एज वेल. सो आपने अच्छा क्रैक कर दी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट यू क्रैक, ओके आई एम गोइंग टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट आउट. उस टाइम पे हमारा था कि वी वांट टू डू मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट्स. दैट वाज आवर निश एंड अ डिफरेंशिएशन कि सारे प्रोडक्ट्स में इट वाज 4 in 1, 3 in 1, 5 in 1, ऐसा हमारा था. एग्जांपल जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट था फुल फेस FF क्रीम. ठीक है, टोटल मेकओवर FF क्रीम. तो आई डोंट नो अगर आपको पता है, बट when a woman consumer is doing up her face, there is primer involved, compact involved, SPF involved, foundation involved, concealer involved. हमने इन 5 प्रोडक्ट्स को एक में डाला, and we said you just need this one product, and we put color correctors there to match it exactly to your skin tone, right? That's how we made it a 5 in 1 product. We had this other product which was brow powder and eyeliner at the same time.
अच्छा, इसमें क्या थिंकिंग थी? ब्राउ पाउडर इंडिया में बहुत नया था, कंज्यूमर एजुकेशन लग रही थी, बट आईलाइनर तो सब यूज करते थे। तो इसे आईलाइनर करो एंड ब्राउ पाउडर वो लोग सीख जाएंगे, राइट? उसके साथ। सो दैट्स हाउ वी हैड कम अप विद द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अपने प्रोडक्ट्स भी आ गए, बट इसके बाद अभी आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, विच इज द हार्डेस्ट थिंग, पैसा वहीं जाता है। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्यूटी बिजनेस में मार्जिन्स आपके अगर 85% नहीं हो तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ग्रॉस कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स शुड बी नो मोर देन 15%। जब आप स्केल पे आए, यू शुड बी एबल टू ब्रिंग इट डाउन टू एटलीस्ट, लाइक अगर मैं बिग कंपनीज लूं, जो इंटरनेशनल कंपनीज है, लॉक्सिटन, शेडो, दे ऑपरेट एट 7% कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओह वाओ, बेटर देन अ SaaS सॉफ्टवेयर बिजनेस। मतलब अगर आपका लिपस्टिक 100 रुपीज MRP पे बिक रहा है, तो आपके पास लिपस्टिक 15 रुपए के अंदर आ ही जाना चाहिए, इवन विदाउट स्केल। करेक्ट। और विद स्केल आपका 7 रुपए तक आ सकता है। 7 रुपए तक आना चाहिए। सो ग्रॉस मार्जिन आर ग्रेट, वो सॉल्व कर दिया ना। हाउ एज अ न्यू ब्रांड, यार, हाउ डू यू ब्रेक थ्रू द क्लटर? लैक्मे में देयर इज करीना कपूर, देयर इज मेबेलिन में whoever was the, I forgot who the ambassador was back then, right? I mean, you have big stars, big brands, आप जाके अपने अब लिपस्टिक बेचो, कैसे आप cut through the cutter? That's where entrepreneur has to, again, think audacious, do something crazy, and come with cut through marketing campaigns, and also find जुगाड़. So I'll give 2-3 examples now. ठीक है, हमें अपनी लिपस्टिक लॉन्च करनी थी, एंड आई सेड अभी कैसे करो, बजट तो बहुत कम था हमारा। जो बजट था वो सब 30-40 लाख रुपए का मार्केटिंग बजट था। ठीक है, अगर मैं कोई भी फीमेल हीरोइन लेने को गया, उनका पर डे रेट वाज एनीवेयर बिटवीन 50 lakhs to a crore, बट मोर इंपॉर्टेंटली दे वुड नॉट साइन फॉर लेस देन अ 3-day कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी ब्लॉक हो जाती है। इफ यू गो टू अ वेल नोन फीमेल एक्ट्रेस फॉर अ ब्यूटी कैटेगरी, मेकअप कैटेगरी, देन शी वांट्स अ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3-4 दिन ब्लॉक, बिकॉज एक बार उन्हें आपसे काम कर लिए, दूसरे उनके साथ काम नहीं करेंगे, तो देन दैट बिकम्स अ बिग बजट। अच्छा, बजट नहीं है, सेलिब्रिटी के लिए बहुत कम पैसे थे, बहुत शूट के लिए बहुत कम पैसे थे, तो आइडिया आया, व्हाई डोंट आई गो एंड गेट अ मेल सेलिब्रिटी फॉर अ ब्यूटी ब्रांड, for a lipstick brand? Forget beauty, you lipstick brand, Lipstick not brand. for a lipstick brand. Don't tell me you got Ranveer Singh, sir. Oh no, he was there, definitely was there, but no, we didn't get Ranveer Singh, maybe we couldn't afford him. Okay. Probably a male movie star never gets a lipstick contract, Correct. so he has zero opportunity cost. तो अगर तो he'll be like, चल मैं हाफ डे का शूट कर लेता हूँ, जो पैसा मिल रहा है तो मेरे, there's no category block. Correct? So you can get him at a good cost, right? Second, you can do a cut through campaign, क्योंकि भैया no one has used a male for to sell a lipstick before. So we went and got Siddharth Malhotra. Okay. Good looking Punjabi hunk, right? And we made him topless. Okay. And उनके ऊपर हमने लिपस्टिक मार्क्स लगा दिए. ठीक है, अच्छा, we as a brand were cruelty free. ठीक है ना, that means not tested on animals. And government had उसी time just announced the cruelty free brand in that every brand has to be cruelty free in India. Animal testing is being banned. So it was relevant also at that point of time. So we got a Sid, we got lipstick marks all over his body, put up the billboard, and it just said, tested on Sid, not tested on animals. Oh, wow. And it went viral. Went absolutely viral. And we were able to achieve it in all our budgets. And it got the complete cut through, plus messaging bhi correct aa gayi, ki bhaiya it is cruelty. So it was relevant. So I think, when you're using a celebrity, if you can do something like that, ki the relevance is there, authenticity, and this was perfect, right? Because Siddharth Malhotra, amazing, good-looking man, right? Most female consumers find him very attractive, right? So it's interesting and naughty for them, and at the same time, not tested on animals. आपका वो message भी आ गया in a non-serious way, right? Superb. Another one we did was we were able to wing a one-day deal with I think it was a one-day deal with Sonakshi Sinha, and वहाँ पर क्या किया हमने? We were launching a high-definition makeup line. High-definition products are कि वो आप कैमरा पे अच्छा लगेंगे. This was in 2019, I think. Then on camera, you'll photograph well with that makeup, right? So हमने क्या किया? We did a fake news arrest campaign of Sonakshi. वो paparazzi से बात करके, it was like, oh, Sonakshi was spotted at the police station, ये वो. And वो पहले ना 6 घंटा वायरल हो गई न्यूज़ की Sonakshi Sinha has been arrested. ठीक है? इतनी वायरल हो गई कि we got a call from Mr. Shatrughan Sinha's office कि where is Sonakshi? Because we had asked Sonakshi to not make any statements in that period. Otherwise, virality कैसी होगी, right? Why कैसे होगा? And then we released the campaign photo, which was Sonakshi Sinha behind bars, and she's saying basically, I got arrested for looking so damn good.
you know, and it was a photograph of her. वो जेल का फोटो होता है ना, आप जब अरेस्ट होते हो with that board, right? But she's looking amazing, glamorous with that. So I think you have to think of very unconventional cut-through campaigns to get that initial buzz going. And we were able to establish that with MyGlamm. We did many such campaigns. काफी सारे ऐसे हमने कीड़ा campaigns करे. And another thing we used to do, which could be interesting for young entrepreneurs, हम ना hoardings barter पे लाते थे. Okay. हमारे होर्डिंग्स के लिए बजट नहीं होते थे. सर होर्डिंग्स एक्चुअल में कॉस्ट कितने करते हैं, पहले वो बता दो ना. अगर आप बॉम्बे के प्राइम लोकेशंस में जाओ तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना के, महीना, राइट. सम कैन इवन गो अप टू 15 lakhs, which are the really really prominent ones. Otherwise others are 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, they'll vary from that. But क्या होता है, सब जब होर्डिंग लेते हो एक नहीं ले सकते आपको कम से कम 30-40 लेने पड़ते हैं. मतलब इट्स 1 करोड़ 2 करोड़ का बजट अगर आपको डिसेंट होर्डिंग कैंपेन, एंड 1 city आई एम सेइंग देन, राइट, देन यू वांट टू डू 5 cities, तो आपका ये बड़ा बजट. सो इट्स अ बिग कैंपेन. अ होर्डिंग कैंपेन इज अ बिग कैंपेन. सर 2 क्वेश्चंस ओवर हियर. होर्डिंग कैंपेन्स आज रेलेवेंट है क्या? Sir, hoardings, in my experience, do not get you ROAS, return on ad spend. They do not get you transactions, 0 transactions, right? They get you great awareness. It's actually brilliant for trade. अगर आपके धंधे में डिस्ट्रीब्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, then hoardings are great. अच्छा. वो देखता है, वाह अच्छा बड़ा ब्रांड है, लेके आओ उसका माल. You know, so I would say you should think of hoardings as a great awareness tool. But why not spend the same amount of money into Facebook and Instagram? सर वो एक अलग फील है उसकी. अच्छा. थोड़ी डिस्ट्रैक्शन कम है. आप गाड़ी में हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आपने एक बड़ी होर्डिंग देखी हो, थोड़ा रजिस्टर और होता है, राइट. एंड इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ना टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. तो आपने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, वहां देखा आपका ब्रांड रजिस्टर हो रहा है, और इंस्टाग्राम पे तो कितना ऐड देख रहा है यार वो. उसका इफेक्टिवनेस मेजर कैसे करेंगे? यू कैन नॉट. सर होर्डिंग्स तो मैं कह रहा हूँ 0 ROAS, इसलिए मैं तो वही कहता हूँ होर्डिंग का 0 ROAS. मतलब गया तो पैसा जल गया बस. वो तो हाँ, वो आपके वो मतलब अगर आपके ब्रांड बिल्डिंग का बजट है तो आप डाल दो उसमें, बट नो दैट इट इज जस्ट प्योरली लाइक it is literally just for brand awareness, right? And it's good for trade, like I said. अगर आपके उस एरिया में distributors, retailers need to carry you, then वो hoarding helps. The other place a hoarding helps is आपका अगर restaurant या shop हो यहाँ पर, हाँ, and you want to direct people right there, बस एक hoarding लो, उसके वो right signal पे saying turn left for this. That's good. There, तो वो constant फिर वो association बनता रहेगा आपकी दुकान के साथ, right? But that's about it. तो ऑन बार्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जाके उनको अपने प्रोडक्ट देते हो उतनी वैल्यू का, एंड वो आपको उतनी वैल्यू के होर्डिंग देते हैं. सर 5 लाख का प्रोडक्ट तो अरे 5 लाख नहीं, आप तो 2-2 करोड़ का प्रोडक्ट दोगे, क्योंकि आप कैंपेन तो एक होर्डिंग से थोड़ी करोगे. हाँ वही, मतलब 2-2 करोड़ का आपने प्रोडक्ट दे दिया. बट सर उस कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है उस प्रोडक्ट का? 30 लाख रुपए. सर तो होर्डिंग वाला 2 करोड़ का ब्यूटी प्रोडक्ट रख के करेगा क्या? सर वो उसके पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. he has a whole business model around it. It's amazing. Okay. कि वो he will take the products and then he has channels to sell it. अच्छा. तो वो आगे जाके बेचते हैं, तो वो मतलब पूरा 2 करोड़ नहीं कमाएंगे उसमें, वो शायद 1 करोड़ कमाएंगे उसमें, राइट. तो होर्डिंग वाला डिस्ट्रीब्यूटर भी है? वो नहीं, खुद नहीं है, बट ही नोज जहां पर वो बेच देता है, राइट. ही विल सेल इट टू समबडी. तो सो दैट, एंड उसको फिर ही हैज सम, आई डोंट नो उनका बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है. मे बी आपके अगले पॉडकास्ट पे यू शुड गेट अ होर्डिंग ओनर ओवर हियर. बट उनके पास होता है कि दे यूज इट फॉर गिफ्टिंग, दे यूज इट फॉर दिस, वो कुछ पैकेज बना के करते हैं, आई डोंट नो, बट उनके पास है, उनका एक बिजनेस मॉडल है इस पे. सो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर टू गेट होर्डिंग्स ऑन बार्टर, राइट. एंड द थिंग इज कि देखिए उनकी होर्डिंग ना, अगर कोई एड नहीं चल रहा है उस पे, तो ही माइट एज वेल टेक व्हाट ही गेट्स ऑन बार्टर. नो, नहीं तो इट्स अ वेस्टेड, एवरी डे इज वेस्टेड रेवेन्यू. It's like a hotel room or an airline seat is going to, that day is going to pass, the flight is going to take off. If it's not full, you've just lost that revenue. तो आपने जाके ऐसे होर्डिंग ढूंढे जहां पे एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं. वो ही करता है, वो होर्डिंग वाला ही कर देता है. वो बोलता है ओके आई विल गेट यू दीस वंस, आपको 15 दिन का ब्लॉक मिलेगा, एंड वहां पर, एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू यूज द होर्डिंग्स फॉर दीस कैंपेन्स दैट वी डिड विद सिद्धार्थ और विद एनीवन एल्स, राइट. सर बहुत सारे ब्रांड सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं, और मार्केट में ये भी थीसिस है कि सेलिब्रिटी ब्रांड्स यूजुअली फेल हो जाते हैं. इनफैक्ट निखिल कामत के पॉडकास्ट पे भी ये डिस्कशन चल रहा था, डू सेलिब्रिटी ब्रांड्स रियली वर्क, राइट. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, आपने सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करा, सिद्धार्थ के साथ काम करा, आपने मनीष मल्होत्रा के साथ भी काम करा, तो क्या ये सेलिब्रिटी ब्रांड्स सच में चलते हैं क्या? इज इट जस्ट हाइप? सर गणेश, यू नो, आपको देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग विद सेलिब्रिटीज. तो लेट्स पुट इट दिस वे, गणेश इज ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, फॉर अ न्यू हेयर जेल ब्रांड, ठीक है. जब दर्पण वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो ये नहीं बोल रहा कि ये प्रोडक्ट गणेश का है, नहीं,
वो ये देख रहा है कि अरे गणेश यूज कर रहा है, आई नो गणेश तो कूल गाय है, चलो ठीक है, आई रिलेट विद गणेश अ लिटिल बिट, लेट्स गेट इट. बट जब आप प्रोडक्ट लाइन बनाते हो, राइट, व्हाट वी डिड विद मनीष मल्होत्रा बाय माय ग्लैम, their authenticity is critical because there the consumer has to believe कि ये सच्ची में गणेश ने बनाया है. गणेश ने 5 साल स्पेंड करे हैं टू मेक दैट परफेक्ट जेल, एंड वो तभी होगा इफ दे फील कि गणेश इज क्वालिफाइड टू डू दैट. सो अगर आप किसी को भी लेके बना दोगे तो लोग बोलेंगे क्या फिट है भैया इसका. इन मनीष केस what worked very well for us. So Manish Malhotra, one of the best fashion designers of our country, right? So fashion is also about color. It's about इस season में कौन सा color आएगा. कपड़ों के साथ makeup is very important. It goes matching, right? And that's where that credibility was very instant. And Manish was very involved. He was an amazing partner, right? He and his team, मतलब हमारा तो नाक में दम निकल जाता था भैया, एक क्रिएटिव अप्रूव कराने में, एक वर्ड, एक कॉपी अप्रूव कराने में, एक प्रोडक्ट अप्रूव कराने में, बिकॉज दे वुड मेक श्योर इट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी एज पर देयर गाइडलाइंस एंड व्हाट मनी स्टैंड्स फॉर. एंड इफ यू गेट अ पार्टनर लाइक दैट, आपका ब्रांड सक्सीड हो जाएगा, बिकॉज तभी तो ऑथेंटिसिटी आएगी ना. अगर मैं ही कुछ भी बना के उसमें सिर्फ मनीष का नाम चिपका के बेच दूं, कस्टमर को समझ जाता है यार, इट्स नॉट ऑथेंटिक इनफ. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट आई थिंक if the celebrity can bring in true authenticity and expertise into the brand, it will work. If the celebrity is, you're just plastering the name there without establishing their authenticity, it doesn't work. The other thing is, जब आप डील करो सेलिब्रिटी के साथ, याद रखिए हमेशा, जब आप सेलिब्रिटी को फीस दोगे तो आपको उनका टाइम मिलेगा. बट अगर सेलिब्रिटी का उसमें इक्विटी है, आपको उनकी कमिटमेंट मिलेगी. And that is critical. How you structure the deal with the celebrity. फिर वो ऐसे गिनेगा नहीं कि मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, I'm done for the day, right? Like, no, what does it need? क्योंकि अगर ये चल गया तो मेरी इक्विटी की वैल्यू इतनी होगी. So that's the other thing. So I would say use a very simple framework. आपको एंडोर्समेंट चाहिए कि आपको उनके साथ प्रोडक्ट लाइन बनाना है, ठीक है? प्रोडक्ट लाइन बनाना है तो उसमें भी 2 फ्रेमवर्क है. डू यू वांट टू को ब्रांड, जो हमने मनीष मल्होत्रा के साथ किया, मनीष मल्होत्रा बाय माय ग्लैम. उसमें माय ग्लैम को ब्रांड हुआ, माय ग्लैम गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट विद दैट, राइट? एंड मनीष गॉट माय ग्लैम्स एक्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन. और यू विल जस्ट मेक अ ब्रांड न्यू ब्रांड लाइक व्हाट के ब्यूटी डिड. नायका ने के ब्यूटी के साथ किया, उन्होंने बाय नायका तो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ के ब्यूटी, व्हिच इज कटरीनास ब्रांड, राइट? सो दोस आर द मॉडल्स दैट आर देयर, एंड विद इन दैट the compensation model for the celebrity will vary from fees to royalties to equity, right? And that's the sort of the variables that you play within and then you create. But if done correctly, celebrities can accelerate your brand journey significantly. MyGlamm के केस में मनीष मल्होत्रा के साथ हमारी प्रीमियम पोजिशनिंग काफी जल्दी एस्टैब्लिश हो गई, डेफिनेटली, अनडाउटेडली, राइट? हम लोग मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक 950 रुपीज में बेचते थे. इट्स नॉट इजी टू सेल लिपस्टिक फॉर 950. वो क्योंकि मनीष के नाम का, दैट वाज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, मनीष के नाम का था, मनीष के इथॉस में बना था, consumers would buy it. So it does work. Sir, I'm diverting slightly over here, but I have heard so much about Manish Malhotra. And this is not just from the customers or aspiring customers, but also from entrepreneurs, that Manish Malhotra has something very, very special. That is his commitment to the art and his branding and his positioning. And since you work so closely with Manish Malhotra, can you tell me what is so special about Manish that he's so well known, not just in the fashion circle, but also in the entrepreneurial circle? Sir, Manish is the most hardworking person you will ever meet. It is amazing. Manish's messages will start at 5 a.m. He'll be the first guy in the office. He loves his work. I have not seen any, and you have to understand, Manish Malhotra is incredibly successful. He is incredibly successful. We don't realize how successful he is. Financially, professionally, personally, he is incredibly successful. But if I have to just say one thing, his work ethos is insane. I have not seen, he is the hardest worker. On any set, in any business, he is fully involved. And I would say that's For example? Sir, he will be the first to show up. He will be the first to show up. He'll be the last to stay there. He will keep at it till it doesn't become perfect. He doesn't take rest. The man is a machine. I mean, he is incredible. He is genuinely the hardest working. I still remember ek bar, Manish and I were on a shoot. And next, the shoot reporting time was at 9 a.m. And
कोइंसिडेंटली हम दोनों उस रात को दुबई में थे द नाइट बिफोर फॉर डिफरेंट थिंग्स. मैं अलग काम से था. We just met each other on the flight. And I realized, Manish is, on the flight. Manish was, of course, sitting in first class in the front. And I said hi, hello to him, and he went. And that flight landed late, whatever. हम लोग घर, मतलब, I reached home by about, I think, 4:35 a.m. Manish also would have reached around the same time to his house, ठीक है? I was like, चलो यार, Manish भी flight पे था. तो अगले दिन वो तो, he's Manish Malhotra now. How he's going to show up at 9 a.m. on the set, right? I think reporting time was 8 a.m. 9 a.m. was the shoot time. I said, मैं आधा घंटा लेट हूँगा तो चलूँगा. चला गया. Manish was there at 7:45 or 8 a.m. Wow. I showed up half an hour late and I was so embarrassed, right? And that's how hardworking he is. And he is, I mean, I'm younger than him, right? So, but that man is incredible. So I would just say that one line, he is the hardest working person that I have met. Beautiful. Sir, now that we've established कि आपने मनीष मल्होत्रा के साथ काम करा, आपने सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करा, आपने सिद्धार्थ के साथ काम करा. So by this time you must be at your peak, right? So how did the Good Glam Group grow in terms of revenue? And how did you hit 600 crores? October 2017, हमने MyGlamm launch करा. In 2 weeks of launch of MyGlamm, मैं मनीष मल्होत्रा सर के ऑफिस में था. And I was pitching the way I pitched to Andre 3 साल पहले कि Manish, let's do business together. Manish gave me the chance और 1 साल बाद मनीष मल्होत्रा का लाइन आया, which was in November 2018. The Siddharth Malhotra campaign, I think, also happened October 2018. Sonakshi campaign happened in early 2019. उस टाइम पे we were still a very small company. I think revenue हमारा FY20 में कुछ 40 करोड़ रुपया था. FY21 में revenue was still about 45 crores or 50 crores only. तो it's interesting, आपने जब कहा 600 करोड़, I think 650 करोड़ का हमारा revenue था, was in FY23. FY21, 50 crores. FY23, 650 crores. That was probably, we were the fastest growing consumer company of India. Wow. To go from 50 to 650 in 2 years. And now you're asking, कैसे हुआ, right? March 2020, COVID hit. हम लोग 25 मार्च को एक इन्वेस्टर के साथ SHA साइन करने वाले थे. डिलीजेंस खत्म, सब खत्म. एंड आई थिंक 20 मार्च या 21 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुई. वी वर अ नॉन एसेंशियल आइटम. हमारी दुकान बंद हो गई. That investor pulled out. We obviously ran out of money then. But my existing investors, who at that time were Bessemer Venture Partners, L'Occitane, and the Mankekar family, they stepped in. और उन्होंने थोड़ा bridge round करा. And उन्होंने कहा cut costs, do everything. And वो stable किया हमने. And I started to look for opportunity. क्योंकि COVID first phase था. Everybody was in my situation कि पैसे खत्म, धंधा बंद. And I was always trying to do this content to commerce. ये जब मैं 2017, 18, 19 में भी I was trying कि मैं content बनाता था, something you should understand really, really well. But ये content बनाऊं, उससे traffic आए and उससे कुछ बेचूं. I was never able to crack it. And I came across this company PopExo, which was started by Priyanka Gill. And they were at that point of time also, वही funding उनकी भी pull off हो गई थी. COVID है, क्या करे? And we ended up doing a merger with them. It was an all stock. I think it was an all stock deal. And we did the PopExo My Glam, happened in September 2020. वहाँ पर हमने क्या किया? 2 चीजें करी. लोग, people say content to commerce, it's not just content to commerce, but it was also what we did on the pricing. It was a mix of 2 things. Content to commerce showed me, PopExo had big reach in tier 2, tier 3 cities. Big reach. I think कुछ, I forget the exact numbers, but I think कुछ 25-30 million social media followers थे या 20 million social media followers थे across different handles, Facebook, Instagram, YouTube. And they used to generate a couple of 100 million impressions a month. Impression मतलब Instagram पे impression, YouTube पे impression. We realized that since it was in tier 2, tier 3, हमने ये एक growth hack निकाला where we said कि आपकी जो पहली lipstick है is free and there was a 99 rupee shipping charge. तो basically आपकी effectively आपकी listing 99 rupees की पड़ी. That, I was talking about Elf Cosmetic earlier. कि उन्होंने अगर लोग 15 में बेच रहे थे तो 2 में बेच रहे थे, हम लोग ने भी वही ट्राई किया, बट इन अ डिफरेंट ग्रोथ हैकी मैनर, राइट? एंड द सेल्स जस्ट शॉट अप. द PopExo impressions got me a free top of the funnel. And then the remarketing, because क्या होता है सर, वो content to commerce में आपको भी पता होगा, वो पहले व्यू में कोई कुछ खरीदता नहीं है, बट पहले व्यू में आपकी अवेयरनेस आती है, तो आपका अवेयरनेस का कॉस्ट बच गया.
You're not paying Facebook and Google to get your first impression. That came from content. But you have to pay Facebook and Google for your remarketing. And that is what we tried to do. And to do the remarketing, our conversion rate went through the roof because we came up with this 99 rupee offer, right? And my new customer acquisition was 30,000 new customers a month before I started this. September 2020 became 60K. By December 2020, it became 100K new customers a month. By March 2021, it became 150K new customers a month. Wow. That is when, याद है मैं कह रहा था वो 20% मैं कर रहा हूं, हम entrepreneurs, ये 20% मेरे हाथ में था. We did that acquisition, great. We created content to commerce journey, great. We dropped that pricing down, which allowed us to leverage the free content ka traffic, great. Now the 80% came in play. What was the 80%? The amount of liquidity जो system में आई post-COVID, because interest rates everywhere came down to next to zero. 2021 was the start of that. That was not in my control. My growth hacking, all of that was in my control. When that came, I suddenly had a lot of investor interest. Everybody who had rejected me in the past wanted to come and invest. So थोड़ा explain करो कौन सा interest rate कम हुआ, उससे क्या हुआ? बहुत सिंपल है. यूएस में, क्योंकि देखिए कोविड में फर्स्ट वेव में सारे बिजनेसेस को प्रॉब्लम आए, तो यूएस, ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्टार्टेड गिविंग आउट मनी, राइट? दे लोअर्ड इंटरेस्ट रेट्स, दे स्टार्टेड गिविंग आउट सब्सिडीज, ग्रांट्स, ऑल ऑफ दैट. उससे there's just a lot of cash came in the system. And US also printed $6 trillion. Exactly, right? When you print that kind of money, that money has to be used somewhere. And everybody was looking to deploy capital. And there I was sitting, a hockey stick. You dream. इसे कहते हैं ना momentum. You dream as an entrepreneur कि a hockey stick is going to be there. For the first time, मैंने इतनी चीजें try करी थी 20 साल की उम्र से. But उस time, first time at the age of 41, I was seeing every month number is going like this, right? And the markets had just turned hot for investments. And so what I did was, I said, I've cracked something. I've cracked something here. Let me go and buy more content companies. Let me go and buy more creator companies. ताकि PopExos अगर मेरे को 200 million की reach आ रही थी, I'll buy 5 more companies and I'll go get to 1 billion reach in terms of impressions, right? अच्छा, अभी मैं सिर्फ एक MyGlamm मेकअप प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अब मैं जाके दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेच रहा हूँ, स्किन केयर भी बेचूंगा, बेबी केयर भी बेचूंगा, हेयर केयर भी बेचूंगा. So let me go and buy those companies as well. And I started my acquisition spree. And because capital was easily available, I was able to do back-to-back fundraisers. तो जो आप कह रहे हैं हमारा peak जो आया was everything that you saw, the Manish Malhotra, the Sonakshi Sinha, the Siddharth Malhotra, the awards we won, was all leading us to this point where when something clicked, which was the content to commerce on the back of the PopExo acquisition, that it clicked, you had the base for it to click. And then external environment changed, where suddenly so much money was in the system. And then I could leverage it. So in that 9-month period, from March 21 to December 21, I acquired 10, 11 companies. I raised 4 rounds of capital back to back. And I took my valuation from $100 million in March 21 to $1.2 billion in December 21. 100 का 250 हुआ, 250 का 500 हुआ, 500 का 750 हुआ, 750 का 1.2 billion हुआ. I started the year as My Glam. I ended the year as Good Glamm Group. And that was the year we hit, I think, our FY22. So FY21 50 crore. FY22 was about 200 crore, our revenue. Most of that 200 crore, half of that 200 crore came through the acquisitions, right? So 50 grew to 100 and 100 came to acquisitions. And FY22 to 23 is where I took that 200 crore to 650 crore, right? 600 crore plus. But that was also my biggest mistake and the start of what, if agar main abhi hindsight mein I look back, it is the start of the fall as well, when I went from 200 to 600, and I'll tell you more about that. सर आपने एक साल में कितने पैसे खर्च करे कंपनी को एक्वायर करने में? सर मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली कितने पैसे खर्च नहीं करे, that was not the issue. That's not what brought my downfall. Okay. What was the issue was, मैंने जो contingent liability करी, मैंने जब acquisitions करे ये, I should have bought all of it 100% upfront. And उस टाइम पैसे खर्च लेने चाहिए थे, मुझे पैसा freely available था.
मैंने क्या किया, आई ओनली बॉट 51%, 60%, 70% ऑफ कंपनीज, एंड बाकी उनका जो 49%, 40%, 30% 3 साल के बाद में खरीदने वाला था, 2 साल के बाद में खरीदने वाला था, बेसिस द फॉरवर्ड लुकिंग रेवेन्यू. एंड आई डिड नॉट पुट, बिगेस्ट मिस्टेक, आई डिड नॉट पुट अ EBITDA guardrail. I only was doing it on the top line. सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अभी करके मैं समझाओ. सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है. अभी आप समझिए, ओके, क्या हुआ मार्च 21 टू दिसंबर 21, 11 कंपनियां खरीदी, ठीक है. क्योंकि 11 कंपनियां खरीदी, आई वाज एबल टू डू बैक टू बैक फंड रेज. हर एक फंड रेज में वैल्यूएशन डबल हो रही है. ग्रेट, ओके. तो दिस वाज द फ्लाई व्हील दैट वाज वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट जब मैंने कंपनी खरीदी, समझिए मैंने ये कांच वाली कंपनी का ब्रांड खरीदा है, ठीक है. इस ब्रांड के फाउंडर हैं आप, राइट, या आप इन्वेस्टर हैं, या जो भी है, आप ओनर हैं इस कंपनी के. मैंने कहा मैं इस कंपनी का आज 60% खरीदूंगा, उसके लिए 100 करोड़, ये लीजिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है. और मैंने कहा बाकी जो बैलेंस 40% है, आई से यार इसे हम ना इसको यहां से यहां ले जाएंगे, इसका रेवेन्यू 3 गुना करेंगे, ठीक है. एंड उसके मल्टीपल पे, सिर्फ रेवेन्यू के मल्टीपल पे मैं आपको पैसा दूंगा, एंड नॉट ऑन EBITDA मल्टीपल. तो पूरा फोकस टॉप लाइन पे रहा, फोकस बॉटम लाइन पे रहा ही नहीं. एंड मैंने उस टाइम पे प्लानिंग ठीक से करी नहीं टू थिंक कि व्हाट विल दैट कॉस्ट मी लेटर. मतलब आपने बोला कि मैं अगर आज आपका रेवेन्यू 100 करोड़ है और 2 साल बाद 300 करोड़ हो जाता है, तो मैं 300 करोड़ के मल्टीपल पे खरीदूंगा, यानी कि 3 times the cost of today. यानी कि 900 करोड़ में खरीदूंगा. नहीं, that multiple could be anything, 4 times multiple, 5 times multiple, 3 times multiple, whatever, right? But the point is, आज आपने 100 करोड़ पे खरीदा, तो लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि आपका मल्टीपल था 3 का, आज का रेवेन्यू 100 करोड़ है, तो आज की वैल्यूएशन 300 करोड़ है, तो आपने 60% 300 करोड़ में खरीद ली, तो क्या मैथ हो गया, 180 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है. अगर मैंने पूरी कंपनी खरीद ली होती तो आई वुड हैव टू पे 120 करोड़ मोर टुडे, ठीक है. बट इंस्टेड अभी मैंने रेवेन्यू उसका 3 गुना बढ़ा दिया 3 साल में, तो कंपनी बन गई 300 करोड़, मल्टीपल हो गया 3 का इंटू 900 करोड़ रुपए. अभी वो 40% ऑफ 900 करोड़ कितना हो गया, 360 करोड़ रुपए. Oh, damn. तो आज की लायबिलिटी सिर्फ 180 थी, कल की लायबिलिटी 360 हो गई. एंड दैट वाज वन ऑफ द बिग मिस्टेक्स आई मेड. और वो लायबिलिटी आप खुद बढ़ा रहे थे क्योंकि आप ही उसको एक्सटेंड कर रहे थे. 100% मैं ही पैसा डाल रहा था और कंपनी को बड़ा बनने में. Oh, damn. सो आज आप हाइंडसाइट में देखोगे तो बोलोगे दैट वाज सो स्टूपिड, माय फॉल्ट. तो मैंने कहा ना, 80% फेलियर का डिसीजन आप हाइंडसाइट में जाओगे, यू कुड हैव चेंज सर्टेन थिंग्स. यही डील अगर मैंने EBITDA पे करी होती या अपफ्रंट खरीद लिया होता, तो फॉर एनी एंटरप्रेन्योर लिसनिंग आउट देयर, इफ यू आर मेकिंग एन एक्विजिशन, प्लीज डू नॉट बिल्ड अप कंटिंजेंट लायबिलिटी. What is that, sir? कंटिंजेंट लायबिलिटी इज दिस कि मैं आपको 2-3 साल के बाद खरीदूंगा, बैलेंस टेक एट अ फिक्स मल्टीपल. डोंट डू इट. आज जितने पैसे हैं जेब में, वो उतने के ही आज खरीद के खत्म करो. That was one critical mistake I made that I did. दूसरा उसके ऊपर mistake I made was I ended up taking debt, loan. उस टाइम पे सब equity दे रहे थे मुझे. 2021 में equity I was getting as much as I wanted. I said no to equity. But instead I took debt. Why? Because dilution बचती है. Dilution मतलब क्या? आज अगर एज एंटरप्रेन्योर मैं 20% कंपनी में, और अगर मैंने equity नहीं रेस करी, debt रेस करा, equity रेस करूंगा तो 20% 18% हो जाएगा. But debt रेस करूंगा तो 20 ही रहेगा. मैंने debt ले लिया थिंकिंग की डाइल्यूशन बच जाएगा, एंड आगे जाके फंड रेजिंग विल बी एज सिंपल. आई नेवर थॉट कि फंड रेजिंग कैन गेट हार्ड, दैट अनदर फंडिंग विंटर कैन कम, राइट. द डेट प्लस द कंटिंजेंट लायबिलिटी became impossible for us to solve later in 2025, in 2024. It all came to the forefront. 2021 end में deals करी, Jan 22 में I emerged as Good Glamm Group. If I had not had the contingent liabilities and if I had not had the debt, all my problems started in 2024 when all these, I had to start paying these off. And that's when money was not available. So this would, I would say, M&A, one big lesson: don't take contingent liability, don't take debt if you can, right? Second, I was too young and early as a business to acquire so much. Mergers and acquisition में, integration में जान निकल जाती है, एक acquisition में जान निकल जाती है. मैंने तो 11 करे across content creator and brand, totally different DNAs. And सारी कंपनी छोटी स्टार्टअप थी, सारी कंपनीज वर nearly losing money, तो सबके प्रॉब्लम्स भी थे. एंड मेरा MyGlamm भी तो छोटा ही था, 200 करोड़ ही था, 150 करोड़ ही था, एंड लॉस मेकिंग था. ऐसे थोड़ी था कि ये 600 करोड़ का, 1000 करोड़ का सिंगल ब्रांड है, सेट सिस्टम, सेट प्रोसेसेस, सेट ऑपरेशंस, स्टेबल कैश फ्लोज, एंड नाउ आई जस्ट कैन वर्क ऑन द इंटीग्रेशंस. नो, आई हैड टू, there were fires here, there were fires there, there were fires there. Suddenly I multiplied my fires by 11. Can you explain one of these fires so that people have an idea? बहुत सिंपल है सर. आप MyGlamm में कर रहे हो और आपका वहां पर
आपके पास अभी तक आपका सप्लाई चेन का ईआरपी नहीं बैठा हुआ है, तो आपके पीओज या आपके फोरकास्टिंग में इशू आ रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फोरकास्ट करेक्टली, वो आपका फोरकास्टिंग का सिस्टम ही सेट नहीं है अभी तक, बिकॉज यू स्टिल अ यंग स्टार्टअप, राइट? एंड इफ दैट इज हैपनिंग, देन उसके बाद आपने जाके 4 और ब्रांड ले लिया और आप उसको भी स्केल कर रहे हैं। अभी उसके स्केलिंग में अलग अलग फायर्स हो रहे हैं, उसका चैनल में कुछ फट रहा है, उसका फोरकास्टिंग में कुछ फट रहा है, अरे आपका खुद का यहीं पे बेस बिजनेस में ही चीजें आर नॉट फुल्ली सेट। अब वहां पर क्या करोगे? जो मोमेंटम गॉट मी टू अ यूनिकॉर्न, I should have known when to stop and consolidate. Instead, I continued to burn to grow. And that momentum turned into what I call the momentum trap, where momentum stopped becoming fuel. See, momentum is supposed to be fuel. वो पेट्रोल जो आपकी रफ्तार बढ़ाता है, right? But वो पेट्रोल कब आग बन गई, वो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ. So I think that is that was a very large part of our undoing, right? So when I started in Jan 22, I had become unicorn, I had raised money, I had finished acquisitions. I should have at that point of time taken a deep breath, slowed down, and started to consolidate. But I tried to do my same playbook and I tried to go in for my biggest acquisition, 3,000 crore rupee deal, which would have doubled my valuation to over $2 billion. एंड वहां पर 6 महीने मैंने बिता दिए, और उस 6 महीने जब उसमें बिता रहा हूं, ये सब फायर्स बर्न हो रहे हैं, इन 11 को इंटीग्रेट करने हैं, प्लस बिकॉज वहां पर वापस अ लार्ज प्राइवेट इक्विटी वाज गोइंग टू कम इन एंड डबल माय वैल्यूएशन, तो आई वाज कंटिन्यू टू बर्न टू शो मंथली ग्रोथ रादर देन फिक्सिंग द P&L, राइट? एंड दैट डिलेड द अमाउंट ऑफ टाइम आई शुड हैव डिलेड व्हेन आई शुड हैव स्टार्टेड फिक्सिंग द P&L. सो एक बड़ा लेसन हमारे सब व्यूअर्स के लिए, राइट? Figure out the one metric that you're going to focus on in that quarter. And you should know what that right metric is. In Jan 22, that metric for me should have become CM2 profitable. मतलब marketing के cost के बाद I achieve profitability. But because I was trying to acquire another large company, 3,000 crore rupee acquisition, and I had to raise money for that, I had to show mad growth. So I continued to pursue top line at the expense of bottom line. Doing it in 21 was okay. You are getting one by one, you're getting to that point, to unicorn. There I was only focused on one, new customer acquisition. I took my new customer in 2021, एक ही metric था मेरा. I went, मैंने आपको 1.5 लाख कहा मार्च में. By the time I ended December 21, I was at 3.5 lakh new customers a month. These are transacting new customers. Wow. We were higher than anybody else. It was crazy. But then I should have just said, now let's make each transaction profitable. That was a big mistake. I started thinking about that only mid 2023. 1.5 साल डिले कर दिया मैंने उसमें. I burnt a ton of money. Our loss that year was, I don't know, 500 crore, 600 crore rupees. तो सर कंपनी में माहौल कैसा था जब ये सब हो रहा था? Sir, it was quite chaotic. One thing I didn't touch upon was the hiring. जो आपका, again, सर आपने 11 कंपनियां खरीद लिया. I went from 200 employee to 1200 employee in 3 months. 1000 employees हमने एक क्वार्टर में हायर करें. And क्या होता है, you don't understand, like that was one of a big mistake. And you know, Ganesh, ultimately हम startup थे, 600-650 करोड़ की revenue हो गई, but हम startup थे. It was a bunch of different brands of doing 100-200 crores that got to there. And I went and hired people from big companies because I thought कि they manage big companies, मैं बड़ी company बन रहा हूँ, they can help me set the system processes. Yes, they have the knowledge of system processes, but they're not used to in a startup culture. Startup में तो सब जगह फट रहा है. It was quite chaotic, honestly, between having so many founders, because you had 11 companies you had bought, and having suddenly so many senior team members. You know, I lost some very close, dear team members who were there with me from the start, and in that chaos, they moved on, and I couldn't retain them back. Big loss. You know, that core team who are loyal to you when you were small, who were there with you, is very important. How you are able to retain them as well, because they bring the culture of the company with you, right? They were there with you from the start. I think it was quite chaotic, and it added to the fire. It was one of the fires. Just added to the fire. So something clicked for you. Environment was right. What I did right was to be able to leverage it and acquire and raise all that. Us point se, I should have slowed down the momentum so it didn't become a momentum trap. I should have focused on integration. I should have focused on securing all the base businesses.
उन सबका एक एक मेट्रिक डिफाइन करना चाहिए था एंड वी शुड हैव बीन सीएम टू प्रॉफिटेबिलिटी इन 2022. Didn't do that. Still went for growth. So wrong metric I went for at the wrong time. बन गया यूनिकॉर्न यार. पॉज कर और अभी कंसोलिडेट कर. कब तक बर्न करता रहेगा? ये क्यों नहीं मैं समझ पाया. It is a thought that I think about every night. It's like, you know, when you reach that scale and you fail, of course you think so much every day what went wrong. So that was just stupid of me. 22, continue to go for growth. More chaotic, hiring more and more people because then problem, अच्छा ये भी problem आ रही है, चलो 2 लोग को और ले आओ, वो solve करेंगे. अरे कैसे solve करेंगे यार? You need to fundamentally be there and get it done like at a small scale. And then, you know, all the bets that I took. तो 11 acquisition किया तो I did too much. Correct? 9 महीने में किया तो I did too fast. 2022 में जब मैंने 200 से 600 करोड़ गया ना मैं, I did it too big also. Which then became a fireball that became impossible to stop. यही अगर मैं 200 से 350 करोड़ गया होता ना, it would have meant सब चीज का मैंने स्केल छोटा छोटा किया होता. But no, every bet I made, it had to be a sixer. Lesson for all our young entrepreneurs out there. That those 3 levers when I pulled together, I pulled too much, too fast, too big. It got me to a point, but then I should have disconnected one of those levers. I'll give you another example. जैसे ऑनलाइन में हम बर्न कर रहे थे, यूनिट इकोनॉमिक सीएम टू प्रॉफिटेबल था नहीं, एंड मैंने डिसाइड किया मैं ऑफलाइन में जाऊंगा. अगेन टू मच, आई हैव टू डू एवरीथिंग, आई हैव टू ओन. अरे आई एम गोइंग टू बिकम द डिजिटल यूनिलीवर. ओ माय गॉड, आई हैव टू ओन ऑनलाइन, ऑफलाइन, एवरीथिंग, राइट? आई हैव टू ओन एवरी बीपीसी कैटेगरी. मैं मेकअप में मैंने करा हूं, बट मुझे नहीं, मुझे हेयर भी चाहिए, मुझे बेबी भी चाहिए, मुझे सैनिटरी भी चाहिए, मुझे आई थॉट आई कैन जस्ट यू नो डू इट ऑल, राइट? बिकॉज उस टाइम आप घोड़े पे सवार हो एंड you need someone to pull you back. So one advice to all entrepreneurs out there, especially guys who are going through high growth, find that one person you trust who can show you how to pull things back, but it's a person you have to trust infinitely because when he speaks आप सुनोगे. तो हम as entrepreneurs सुनते नहीं है. When I'm burning in online, I said नहीं offline जाना है. offline जाना है, साथ में चलो 100 cities में खोलेंगे, पूरी टीम खड़ा कर दो. 300 crores doing offline. 300 crores. Ridiculous. Because I wanted to create a distribution that people take 10 years to build and I want to do it in 1 year. It's like, yeah, I'll have that and then I can go in and it'll be... And offline is a business which you cannot push. It's a pull business. So, and अगर मैंने offline, so again, just to अगर मैंने online CM2 पे focus किया होता, and if I'd cracked that, and फिर मैं offline कर रहा था बड़ा, still I can think. I should ideally said offline नहीं यार, पहले 2 सिटी में करते हैं, 20 काउंटर करते हैं, क्यों 2000 काउंटर चाहिए, राइट? सो एवरी एक्टिविटी आई ट्राइड टू डू वाज टू बिग. एवरीथिंग हैड टू बी अ सिक्सर. So either you do less and do it fast. Speed is great, so do it less, do fast, and then you go for big. It's fine because you're doing less, your bets are limited. तो मैं 1 या 2 चीज पे बड़ा bet करता. Like I tried to make all the 5 brands national brands simultaneously, which is a mistake. I shouldn't have done. Which 5 brands are? My Glam, which was the brand I started. The Mom's Company, which I bought, a mom and baby brand. Sirona, an intimate hygiene brand. Organic Harvest, which was an organic personal care brand. And Sane Botanica, which was a hair care brand predominantly, with some skin care. मैं सब 5 में celebrity लाओ, सब 5 का TV campaign करो, सबको बड़ा. Should have done 1 या 2. वो जब बड़े बन गए and उनका पूरा funnel और flywheel ठीक से चल रहा है and profitable है, बाकी के 3 लाने चाहिए थे. So go big on 2. 3 should have been small, but I've tried to go big on everything. So why couldn't your team tell you this? Did they not see it or did they not tell it? Sir, you can't blame the team on this, sir. The team is looking up to their leader. You are the leader. It's your job to see it, right? It's your job to figure it out. And, you know, as entrepreneurs, we are eternal optimists. It's the optimism that allowed me to go in front of Andre Hoffman and try to get L'Occitane for no money or to pitch to Serena Williams when we were a 40 crore revenue company, right? But it's that self-belief and that optimism. But you need, and that's why I said that वो कब आपका जब वो momentum trap बने, उसके लिए you need that one mentor, the guide, and people were telling me, ऐसे नहीं कि लोग नहीं बोल रहे थे, आप सुनने भी तो चाहिए ना, आपको समझना भी तो चाहिए. Andre told me, Darpan, get profitable all throughout. And I kept telling Andre, you run an old school business. L'Occitane's an old school business. This is digital first, Andre. Look, we'll get the valuation. We'll get the next round of funding.
I guess it's just hard. I don't know, until you've been through it and lived through it. So everybody comes on board because of you. Whether it's your shareholder, your lender, your vendor, I was telling you about Vittoria from Reggie, all of these people, they've supported you, and your team, your family, you're responsible for them as well. And when something like this happens, as an entrepreneur, when things are going well, you don't realize कि ये हो सकता है. And अगर आपको पता चल जाए कि जब ऐसा कुछ होता है, after that scale, वहां पहुंच के गिरना is a crazy crash. जब आप वहां से पहुंचते हो, इन सब की लाइफ्स कैसे इंपैक्ट होंगी? I think you will become so much more careful in how you operate once you have scaled. You will learn to, आपकी जो रफ्तार है, आप उसको पेस आउट करोगे. आप वो अपने एम्बिशन को टेम्पर करोगे, क्योंकि आप वर्स्ट केस भी सोचते रहोगे. एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने वर्स्ट केस कभी सोचा ही नहीं था. आई नेवर थॉट दैट वुड हैपन. एंड आई एम सेइंग दिस, कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर हो जो हाई ग्रोथ में है, एंड अगर उसे लग रहा है कि समथिंग आई डोंट नो, मैनेज नहीं कर पा रहा कि क्या होगा, पुट मी इन द रूम विद द गाय फॉर 2 hours. मैं उसको पूरी पिक्चर दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने अब पिक्चर देखी है ऑल द वे थ्रू, कि आप जीरो से हीरो से जीरो बनते हो, तो नॉट जस्ट योर लाइफ बट हाउ एवरीथिंग एल्स चेंजेस. तो एंड आई थिंक एक बार वो कोई सुन ले दूसरे एंटरप्रेन्योर से, आई थिंक ही विल बी एबल टू रिलेट विद दैट, एंड होपफुली वोंट मेक द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट आई मेड. मेरी गलती क्या होगी? आई स्टार्टेड स्मॉल, आई ऑलवेज थॉट बिग, ऑलवेज माई ड्रीम वॉज, आई रिमेंबर मैंने एक वीसी को 2018 में पिच किया था. तब तो हम छोटा 25-30 करोड़ का एक सिंगल ब्रांड थे, एंड आई सेड मैं डिजिटल यूनिलीवर बनाऊंगा. उस टाइम पे कहा था, एंड वो वीसी ने कुछ बोला नहीं, बस उठ के चला गया. वो मीटिंग हम हुई नहीं हमारी, ठीक है. एंड आई केम वेरी क्लोज टू इट. 2021 में हम बन गए थे, मतलब यूनिलीवर नहीं बन गए थे, बट वी हैड बिकम अ पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स. हम लोग वी हैड done something meaningful, and that time when I told people I want to become digital universe, they believed me. They said हाँ ये बन सकता है, right? So think big था. We started small also, धीरे धीरे करके बड़ा किया. And because think big था, जब वो moment आया, आपका tipping point आया, you are able to leverage it. मेरी गलती क्या हो गई? वो leverage करके मैं पहुंच गया, वहां पर मैंने वो ढील नहीं दी. मैंने उसको I did not rein the horse back in. Got it. Right? That was the mistake. फिर वहां से भी I started doing think big at too big a scale with too many bets too fast. Understood. Sir, when these failures started to pop up, आपके फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया, आपके दोस्तों ने कैसे रिएक्ट किया, और आपके इन्वेस्टर्स ने कैसे रिएक्ट किया? Sir, I'll tell you, एक तो entrepreneur की journey is very lonely. आपको भी पता है, सबको, it's when you're successful, it's lonely. But when you're failing, you can't imagine the loneliness. Family तो of course is always there for you. Family का तो ये अच्छा होता है कि वो success में वो they don't let it go to your head, because वो तो आपके लिए you're still that same fool, and they just make sure कि nothing goes to head. In failure, they are the rocks who stand by you. I mean, without the support that I got from my wife, from my parents, from my sister's husband and a family, my wife's brother and parents, like the whole family comes together, right? So that's great. I think your close friends really come and stand by you, right? They're like family. During success, they're making fun of you, but during failure, they're there with you, right? But extended people, everybody changes. How, sir? Sir, आप अछूत हो जाते हो. आपको I was part of this some entrepreneur WhatsApp group, and बस एक दिन मैसेज आया, you're no longer part of the group. No discussion, nothing. When they wanted me in the group, they were there wanting and coming to me. And when you're not successful anymore, it is, and that happens across multiple layers, right? People don't want to be known, don't want to be seen around you. Earlier it's different, right? And I think everybody who's watching needs to know कि यार ये सब चीजें ना कुछ मायने नहीं रखती. And success or failure is not life. These are all a page in your life. एक पन्ना, एक सफर है. ये ना destination, मंजिल नहीं है, right? Today I've launched something new. Suddenly people are again coming back again, right? Tomorrow that is successful, more people will come back. Tomorrow that's a failure, people will say something else. Your job as an entrepreneur is just to keep trying.
and keep at it. That's it. So I think trying to keep yourself mentally very strong, it's very hard, guys. I mean, I don't think it's easy for people to go through that. It's quite tough, and I don't wish it on anyone. I hope people don't have to see it. But when you're in it, just stay strong. Stay strong. आपने कुछ just stay at it, right? आपका intention correct hai, and you will find your way out of it. But be prepared and basically, if you don't allow external people to affect you, whether you're successful, failure, or otherwise, correct, you'll always be fine. But if that starts affecting you, then something like this is very, very, very hard, for sure. So thank God for family and close friends. आपने investors का पूछा. I would have to say that I am actually very grateful to my investors. A lot of people said, "Oh, did investors put pressure on you? Ye, wo, and all." It's nothing, yeah. What? Investors have backed you and your vision. They saw you growing a certain way. You have, created a certain vision. Obviously, they're going to, and I would just say, touch wood, I think all my investors, they were exceptional even during my bad time, right? And so I would encourage any entrepreneur out there that look at my cap table, and all of these guys are guys that you should definitely try and get. The other thing on investors, just for, I'll tell our entrepreneurs one thing. It's not just the brand of the investors fund, but see that partner who's going to be on your board and who's going to work with you. It's like a marriage. So the fund can be great, but अगर partner के साथ chemistry नहीं हो रही ना आपके वो initial days में, figure that out during a term sheet. Then you can have problem later. So make sure there is great chemistry there, because when things go bad, which do happen more often than not, then that chemistry plays a lot. I mean, that relationship will play a lot. So I'm grateful to all my investors for all the support they gave. I'm extremely sorry and terrible about what ended up happening, and not just for my investors, for my lenders, for my vendors, for my employees. It is, I mean, I genuinely carry that burden every day, right? And one big part of it is, can I make it right for all of them? So what I'm doing now, I've created that Good Glam restitution fund there, where I'm allocating equity from my new venture into that, with which if my new venture succeeds, there is maybe some hope for some of them to recover some of their money. For the employees, I have taken on a personal pledge for whatever I start making now, whether it's a salary, whether it's equity gains, etc. 25% from that will go towards paying any unpaid employee dues. What I discovered that my purpose in life is I want to help other people build. Because they are the guys who got me out of when I was really down and out in March and April this year. I was really down and out. I got back to being the Darpan that everybody knows, the Darpan that my team knows, that my family knows, by talking to other entrepreneurs and helping them build. Their energy got me my energy back. And so I decided, can I just turn this into a large platform where I can impact thousands of startups? Not just 10, 20, 30 that I can do on my own, but leverage the whole ecosystem to have an impact on 5,000 startups, 10,000 startups, maybe even more. And that's what's keeping me going. And in that process, if it becomes a meaningful business, I can also make it right for people who lost money with me in my last business. So that's the path I'm on now. Thank you so much, sir. This has been wonderful. I'll just quickly summarize the most important learnings from our conversation. So we first try to understand what is the contribution of the entrepreneur in his success and what is the contribution of market forces. And here's where you said that initially 20% is in your control, 80% is in market's control. But once you become successful, this equation flips. 80% is in your control and 20% is in the control of the market. This podcast had two agendas. Number one, to make sure that any entrepreneur who's watching this episode or any aspiring entrepreneur who's watching this episode does not have fear of failure. And number two, it was to arrive at all the key lessons that you've learned the hard way through your journey. So your story started in 1999 with masthangama.com. Then you worked at bazi.com, went to Barcelona to do your MBA. And in 2010, you got the license to L'Occitane Spa. Then you gave out a very, very important lesson. That is, when you're sitting across with a very, very important person, with a very established person, don't pitch money. Pitch them something that they want even more than money. In this person's case, you figured out that
All he wanted was his brand to deliver world-class experience to the customers. And you sold that dream to him, Mr. Andre. Andre Hoffman, yeah. Mr. Andre. Because of which he gave you the license. And he gave you the license for free. So here's where we learned a very, very important lesson, that give them something more important than money and then drive your way to the money. In this case, great experience, and through great experience, if you can make him money, that's great. Because everybody is there to offer them money. If you can offer something better, that's great. Same was the case with Serena Williams also. She didn't want any more fame. She didn't want any more money. All she wanted was to have a great product represent her name. And you did that for her. Then we spoke about how to build a beauty brand in this crowded space. And here you mentioned step number 1, identify a micro niche. Not a niche, micro niche. Something as simple as eyelashes, something as simple as vitamin C. A very small category. But that small category will get you a foot at the door, and it will get you in the hands of the customer. Once you build your brand, once you establish who you are and what you have to offer, what do you stand for, the customer will then try out multiple products that you have to offer. And here's where we spoke about the framework on how to build a beauty brand. And here you mentioned that all beauty brands that exist in the market, most of them, they have a simple step-by-step framework. They first try and figure out what do the customers want in the market. This is product research. After they do their R&D, then they go to these contract manufacturers and you give out names like Reggie, Viva, Cascap, Intercos, Vedic, and NG Electro. Right? If you go to these contract manufacturers, they'll manufacture the product for you. The challenge, however, is that you will have to fulfill the minimum order quantity. What is minimum order quantity? This is the minimum number of units that they will manufacture for you per product. Now, the challenge over here is that you'll have to take at least 50 products to the market. Now, when you take 50 products to the market and you have a minimum order quantity of 5,000, you're practically offloading 2.5 lakh units into the market. And that is where it gets complex. Even though 20% of the products result into 80% of the revenue, the mere catalog, the mere range of catalog acts as an instrument of attraction to get you your first set of customers. That is in makeup, not in skincare. In makeup, okay. After that, if you work closely with your supplier, if your supplier can act almost like a co-founder who's as involved as you in your product, you'll be able to offload great products into the market, and that will then help you build a brand. In between, before building a beauty brand, you also tried Glam Squad, which is basically Urban Club, but for My Glam only. It was inspired by Glam Squad. Okay. Glam Squad was the New York company. Okay. It was inspired by Glam Squad, and you built a platform, basically Urban Club, but for salon services. Salon services. Then we spoke about where was the inflection point. The inflection point came when you launched that 99 rupee lipstick in 2021. Yeah, 2020, September 2020. No, but that was PopExo acquisition plus lipstick. You acquired PopExo, which had 25 to 30 million social media followers, and you launched a 99 rupee lipstick. Once you launched this lipstick in 2020, this was the time of COVID, so things went south. Is that correct? No. This was, so when things went south was why I was able to acquire PopExo. Okay. Right. And then we were just coming out of it because September 2020, the first wave was getting over. We were just coming out of it. And while you were coming out of it, because of PopExo, you were able to build an insane top of the funnel that got you an insane number of customers, and you started acquiring customers you went from acquiring 30,000 customers to 60,000 to 1 lakh customers a month, and that gave you an insane revenue. Once this worked for you, you realized that you could actually acquire multiple content companies, build multiple top line, build multiple top of the funnel, and hence derive more revenue. But that is where your hypothesis failed because it had 3 challenges. The first challenge was integration. If you acquire 11 companies, you have to make sure that those 11 companies first work in line with your existing company. Secondly, they had to solve their purpose of acquisition, which was if PopExo was acquired for the purpose of building top of the funnel, each of them had to build the right top of the funnel, which could then result into bottom line, as in profits. And that's where, again, your hypothesis went wrong. And third and most importantly, when you had too much, you were still launching too many ventures. For example, you went offline, spent 300 crores over there. So you were doing 3 of the worst things an entrepreneur could do at that scale, which is
You did too much, you did it too fast, and you tried to do it too big. And that is where things started to spiral. And if you were to go back in time, the first thing that you would do is go CM2 positive. As in, after removing the marketing cost, you would try to be profitable. Once you're profitable, you would have proof of concept, proof of scale, and then you can use that proof of concept and then scale to then venture into multiple domains. But what you try to do is venture into multiple domains, hoping that the proof of scale and proof of concept will exist. In between, sir, you also gave out a very, very important lesson on how to get noticed in a crowded market. And here's where you gave out the Siddharth Malhotra example, where during that time, a regulation had come out banning animal testing, and your billboard said, tested on Sid, but not on animals. This was because all the female actresses, they were charging an exorbitant amount because it was an opportunity cost for them. But Sid was obviously not doing lipstick brands, and you could use Sid on your billboard and create a name for yourself in the crowded market. The same thing is what you also did with Sonakshi Sinha, where she was apparently jailed for looking too good. And then we also spoke about a framework, sir, the Sarthak Ahuja framework of how to find a future opportunity. Find a country that is 2 to 5 years ahead of India in terms of skincare trend or manufacturing trend, whichever niche you're trying to get yourself into. Visit that country during a very specific time, during an exhibition, during an expo, or during a fair. And over there, you'll find both manufacturers and products of the future. And then you can come back to India, marry your market research with those product ideas and see what will work for you. But what you have to keep in mind is think big, but start small. Try to become profitable as soon as possible so that at least there is no burden of profitability while you scale. The burden of profitability should be taken care of by your main company. And if your other companies are not profitable, that's still okay. But at least you have cash flow coming from somewhere. You can then use those cash flows as input for the other companies and then scale. And last and most importantly, don't run behind valuations, run behind value. Because if value is there, valuation will follow. But just because valuation is there, value will not follow. Does that sum up our conversation, sir? I think it sums it up beautifully. It was great. Thank you so much, sir. It Thank was a you. pleasure to have you. No, same here. Thank you. I've learned a lot actually talking to you. It's awesome.